others. And this is my first visit to this beautiful campus. I'm really delighted to meet you all. Respected Vice Chancellor, NEHU, Professor Prabhashankar Shuklaji, respected Director, IIM Shillong, Professor D.P. Goelji, respected President, NEHU Teachers Association, Professor L. Kwama, respected Sri Ernest Mauri, eminent social activist, Srimati Nita Mahasekhar, Director, NEHU, respected Sri S.P. Mahanta, former Additional Advocate General, respected Shevasasi Datta, Director, ASEAN Confluence, respected Srimati Dia Rathore, and all the dignitaries present here today, and my student friends. Today, the region of our assembly here is mainly to discuss about how, through the policy of honesty, dedication, devotion, decency, discipline, and hard work, a leader can transform the future of a country. A leader can bring hope and expectation. A leader can generate the self-confidence of every citizen of the country. We all know that leader is none other than our beloved Prime Minister, Sri Narendra Modi. If we are to discuss about his personality, then we'll be needing many hours, because this allotted fixed time period is not sufficient enough to glorify his personality and commitment, his service to the nation. And I, being a member of the Council of Ministers, Government of India, got an opportunity to work with Modi ji. And before becoming the Prime Minister of India, he was the Chief Minister of Gujarat since 2001. Before becoming the Chief Minister, he never contested any level of election, not even Panchayat, not even Council. But he had enormous experience traveling the country from one part to the other part, spending many moments with many people in many places of the country, from Kashmir to Kanyakumari, Gujarat to Arunachal Pradesh. During that time, he was not that way known to the people of the country. And before 2001, whatever visit he has performed, whatever time he had spent with the people of the country, that has, I believe, is the biggest period of his learning experience. We do not know, but later on we come to know. Because I myself, when I first met Honorable Prime Minister Modi ji,
That time I didn't have idea about his background. When I later got to know that before becoming the Chief Minister of Gujarat, he had spent many months, many years in the entire northeastern region. And during this period, he had spent many nights in many districts and having in-depth interactive session with the villages, with the people of Northeast, trying to learn the language of Northeast, trying to learn the tradition of Northeast, trying to learn the traditional skill of Northeast. So that is how he had his serious effort of learning of India. The book which has been written about his 20 successful years of regime as a Chief Minister as well as a Prime Minister of India. Many greatest personality represented from different walks of life, field of profession. Whatever they have quoted is very, very encouraging for all of us. As you know, this book, Modi at 20, Dreams Meet, is about the 20 years political journey of Prime Minister Narendra Modi ji, who dedicates his whole life for the people of the country. The book has a foreword by iconic singer Lata Mangeshkar. She wrote, we all know, the Nightingale of Indian music. Lataji, we have all heard her song, and her song was so touching, so motivating, so natural, so beautiful, so human. So that is why Lataji's modulation of her voice, rhythm, and above all, beauty, which has drawn the millions of listeners across the world. And I think if we impartially assess about the popularity of the singer of her age, I believe Lata will dominate the scene. No doubt about it. So she is in the heart of every Indian, every music lover of the world. So that is the personality of Lataji, we all know. Lataji has wrote, by temperament, Narendra Bhai is not what we conventionally imagine of a politician. From my various conversations with him, I sense that his pursuits are different. He has no attachment to power. His goal is larger, to be able to do something for the people of India. His patience lies in the fact that he wants the growth story to be meaningful for every person in our country. This is what Lataji had written. I believe that whatever changes we have witnessed in our days, it is the concrete example of Modiji's service to the nation. In many ways, look at his influence in the globe. If you cite one example, that would be more meaningful, more convincing, more factual, with full of substance. That is International Day of Yoga, where whatever he proposed before the UNO General Assembly,
that has been accepted by all the member nations of the UN. 21st of June should be observed by UN as a International Day of Yoga. What is the purpose? For the preservation of health and also for the promotion of humanity. Yoga, which is called in our term yoga, this is a science, ancient science. Health and mind, which integrate body, mind and soul, which gives us the feelings of happiness and which can make you fit and happy and energetic and active for all the time to come, for all the given eventuality or challenges of your life. So that is the power of yoga. And through this practice of yoga, it is Modi's single-handed initiative. Look at his global influence. Now 193 number of nations do practice yoga. In the latest concluded International Day of Yoga of 21st June, do you know what is the number? Participated 125 crores people of the world. So this is the power of his global personality. This is the power of his global influence. Now, in this particular year, the theme of International Day of Yoga was Yoga for Humanity. That means through yoga, he could able to integrate the global society with a sense of oneness and humanity. I believe this is enough. And look at now his very, very noble initiative. How to put down the global temperature below 1.5 degrees centigrade. Whatever he made his appeal in the COP26, all the member nations, all the nations of the world, they have wholeheartedly extended their support and accepted Honorable Prime Minister's proposal. And it is he who is guiding the global society now. Every nation, right from America to all others developed nations, they are all accepting his leadership as a global leader to preserve the ecology and environment, for the preservation of Mother Earth, for preservation of nature, for preservation of our soil, the preservation of our living organism. So this is what Honorable Prime Minister has got his global influence. And we are all proud of it. In the recent past, you have seen the most difficult situation of Russia-Ukraine war. During that time, amidst of his warfare, heavy fighting and bombardment, under that circumstances, Honorable Prime Minister could able to rescue the Indian student from that difficult situation safely back to the nation. So this is, we are all really proud of him because of his leadership. Now, look at the latest figure. How India is emerging, one of the largest leading economy of the world. We could able to place ourselves above UK. That is the biggest achievement in the Azadi Ka Amrit Mahotsav Kal. That is happening only because of Honorable Prime Minister's good governance and honest leadership, dedicated leadership, hard-working leadership, leadership with knowledge, power, wisdom, ability, innovation, and technology.
Honorable Prime Minister is always saying, हिंदी में एक मैं बात रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा करते हैं कि नीति हो या रणनीति कितना ठीक क्यों ना हो, नीति हो या रणनीति कितना ठीक क्यों ना हो, अगर नियत खराब है सब बिगड़ जाता है। इसलिए गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए सरिक्त सही है, ईमानदार, मेहनती, निष्ठावान ऐसा देशभक्त चाहिए। और ये देशभक्त, he is the true patriot and he is the true leaders of the country who understand each and every citizen mind about their hopes and expectations, about their problem. He can read effectively. That is why through his various schemes he could address all sections of society in the country so that everybody could feel comfortable and secure. That is why his inclusive policy of bringing everybody together, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, देश को जोड़ने के लिए, to make India more powerful, to integrate the people of the nation. Let us develop the spirit of togetherness. Togetherness to develop that powerful Team India. Team India. Without the team spirit, no one can win the battle. Now we are emerging one of the largest economy of the world. Now, under his able leadership, we are all aiming to become self-reliant India. Self-reliant India. Atmanirbhar Bharat. You will be happy in the recent past, that is on 2nd of September. गोयल जी और शुक्ला जी, आप सबने शायद खबर रखा होगा, 2 तारीख को, 2 सितंबर, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, शिप बिल्डिंग हमारी एक PSU है. It is under the Ministry of Port, Shipping and Waterways. Cochin Shipyard Limited at Cochin, Ernakulam, that is known as Ernakulam in Kerala. And you'll be happy to know, for the first time in the 75 years of our independence, India could able to manufacture one of the largest warships in the world, INS Vikram. This is the largest indigenous aircraft carrier, IAC, indigenous aircraft carrier. And this particular warship has got all kind of modern technology incorporation, all kind of facilities, all kind of system need to be incorporated in the same warship. And you know, 26,000 metric ton steel has been supplied by none other than SAIL, Steel Authority of India Limited. It is all our indigenous. Make in India. If you want to talk about Make in India, if you want to talk about the example of Make in India, then this is the INS Vikram. And this has all been possible only because of our visionary leaders, Prime Minister Narendra Modi, because of his untiring effort, inspiring all the engineers. You know, you'll be happy. More than 2,500. All kind of engineers, design engineers, mechanical engineers, technical engineers, all kind of engineering skill has been incorporated to build this particular warship. And on the 2nd day of September, it has been commissioned by Indian Navy. So this is what the power of India.
This is the example of Make in India. This is an example of how Modi's good governance works, how he can dream to deliver. So dream has been transformed into delivery. There are thousands of examples how he is motivating right from the downtrodden to the top, all sections of society, whether he is a plumber, whether he is a farmer, whether he is a daily wage earner, whether he is ST, SC, OBC, all sections of society, whether he is women or youth, aged, old age, dibbang, through this different kind of policies and program and initiative. Now he's empowering India, empowering Indian society, empowering women, empowering youth to make this particular nation most powerful nation in the world. Today, all the bright students of NEHU who are here, I have a special appeal to all of you. Please go through the book line by line to get the element of inspiration from Honorable Prime Minister. How from a humble background, a person, because of his honest and dedicated and committed hard work, service to the nation can grow to the top, reach to the top. And he is not from any known family, political family. कोई मोदी जी ऐसा कोई परिवार से बिलोंग नहीं करते जिसमें बड़े पॉलिटिशियन हो, बड़े प्रमोटर हो, बड़े धनवान हो. एक मामूली सा इंसान जिन्होंने जीवन में बहुत मेहनत की, निष्ठापूर्वक मेहनत की, जिन्होंने ईमानदारी से समाज को सेवा की, जिन्होंने भारत माताओं को समर्पित भावनाओं से सेवा करने की वजह से आज जनता के आशीर्वाद, जनता के सहयोग मिल रहा है. और हर हिंदुस्तानी ने दिल में मोदी जी को रखा है, भक्ति भावनाओं से रखा है, क्योंकि उन्होंने कोई भी कदम किसी भी समय पे अगर उठाते हैं, मूल मकसद होती है कि देश सेवा, सेवा ही संगठन. It is he who believe the transformation through transportation, who believe perform, reform and transform. And he is the first Prime Minister in the 75 of our independence who has given an, I believe, topmost priority for the speedy growth of Northeast India. If you make the impartial assessment of his contribution to the speedy growth of entire Northeast, you will discover the burning example, factual example. This is his heart to this part of the nation. Because this part of the nation was totally neglected in the last 6 decades. We all feel it. We all understand it. But if young generation, if you go through the background, then you'll discover the truth. It is not that I am making some statement out of prejudice against somebody. No. It is an impartial assessment. I was a student leader. I was also heading the student organization called NEHU, North Student Organization. It is an umbrella organization having the constituent of all the leading student organizations of Assam, Manipur, Meghalaya, Tripura, Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram. I was heading that organization for 5 years. So I have seen the problem of Northeastern. I have seen the problem in all the areas.
whether in this area of connectivity, communication, education, health, tourism, youth affairs, all, even in the, this thing, agriculture, in all area of human development, this part was totally neglected. This has never been reflected in earlier budget. But after 2014, new initiative has started to take the entire Northeast along with the journey of India. It has been brought to the center stage by Honorable Prime Minister Narendra Modi. Because of his good governance, you will be happy to know, so far, only in the sector of connectivity and communication, 2.8 lakhs crore has been spent. यानी कि 2,80,000 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए, विकास के लिए इसमें खर्च किया गया है. मुझे लगता है कि आप सबको इन विषय को विशेष रूप से नेहू में चर्चा होना चाहिए. ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए हमें कनेक्टिविटी चाहिए. कनेक्टिविटी के बिना ना किसान आगे बढ़ सकता है, ना विद्यार्थी, ना महिला, ना युवा, कोई भी आम जनता आगे नहीं बढ़ सकती. इसलिए कनेक्टिविटी पहला कंडीशन है. दैट इज वाई ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू transportation. Without transportation, transformation is impossible. That has been deeply realized by Honorable Prime Minister Narendra Modi. That is why he has given wholehearted support. उन्होंने क्या कहा? When he made his maiden speech in the Parliament as a Prime Minister in 2014, I was just sitting after 4-5, row. As a Union Minister, Independent Minister for Skill Development and Sports and Youth Affairs. Because of your blessing and the kind support of Honorable Prime Minister, I got an opportunity to serve the nation, particularly to generate the youth power. He firmly believed that youth-led development. India is the youngest nation in the world. You must understand it. You know what is the size of the population out of 130 crores population? It is 85 crore population of India below 35 years of age. That is why we have been always considered to be the youngest nation in the world. And the youth power is the supreme power. If a youth, whether it is man and women, that's another matter, but youth as a force, if they generate, they are full of potential as per their ability, as per their courage, determination. If they work hard to develop their personality, then you can bring a lot of transformation in the society and the country and the globe. That is why Honorable Prime Minister firmly believes that India should have the youth-led leadership. Youth-led kind of development. Youth-led development. That is why for the development of youth, so many schemes has been brought to the place. Digital India, Make in India, Startup, all these kind of scheme has been brought only to empower the youth. Beti Bachao, Beti Padhao, to empower our women. So this is the very important section of society which can constitute the main component to make a society, to make a state, to make a nation powerful and dominating in the globe. So I believe Honorable Prime Minister's vision for the entire region is very distinctive. It has got full of clarity. What he said in his maiden speech, he said, Northeast is full of natural resources. हमारी प्रकृतियों का संपदा, संभावना और शक्तियों को देखते हुए उन्होंने कहा, नॉर्थ ईस्ट को जैविक केंद्र के हिसाब से इसको सुरक्षित करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, प्रबुद्ध करना चाहिए.
And because of his that powerful narrative, नॉर्थ ईस्ट कोई मामूली इलाका नहीं है, देश की अष्टल अस्मि है। अष्टल अस्मि का मतलब हमारे पास जो शक्ति है हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश के हिसाब से खड़ा करने के लिए, हिंदुस्तान को अपने शक्ति का सही पहचान दुनिया को दिखाने के लिए नॉर्थ ईस्ट को अगले दिनों में नई इंजन का भूमिका निभानी होगी। एनी इज नॉट ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट, एनी का मतलब है न्यू इंजन फॉर इंडियाज ग्रोथ, न्यू इंजन फॉर इंडियाज ग्रोथ। दैट इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट रिपोज in us, in the personality, in the society of Northeast, by none other than our beloved Prime Minister Narendra Modi. इससे साफ जाहिर है कि हमारी जो कर्तव्य होती है, हमारी जो ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश के लिए, हमें सही उसको निभाना चाहिए। I think whatever responsibility and duty we have for the cause of the nation, for the cause of the country, every soldier of the country will have to work accordingly, put his hard work accordingly, dedication accordingly, devotion accordingly. Then this region can contribute a lot to make India Atmanirbhar Bharat. हमारी कभी कभी आता है ना, शायद आप लोगों ने सोचा होगा ये मंत्री इतना चिल्ला के क्यों बोल रहे हैं। मैं नॉर्थ ईस्टर्नर हूं ना, हमें पहले हमने देखी है, क्योंकि 2014 के पहले हम लोग जब विद्यार्थी संगठन की पदाधिकारी होने के नाते कभी कभी मेमोरेंडम लेके हमें दिल्ली जाना पड़ता था, केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकात के लिए आवेदन करना पड़ता था। तो आवेदन करके हमको महीना भर इंतजार करना पड़ता था, कभी मिलती नहीं थी मौका, देते ही नहीं थे, समय नहीं है। सारी नॉर्थ ईस्टर्न, चाहे असम की हो, मेघालय की हो, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, सबकी हालत ऐसा ही थी। तो इसलिए हम लोग अकेलापन महसूस करते थे। We felt isolated. हमें लगता था कोई हमें ख्याल नहीं रखेगा। किसी जमाने में तो एक बड़े नेता ने कह दिया, My heart goes to the people of North, है ना, बोल दिया था ना। लेकिन इन चीजों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही पहचाना, सही उपलब्धि किया और उन्होंने तय किया कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से किसी भी हालत में दूर नहीं देखना चाहिए। ये करीब में है, ऐसा नॉर्थ ईस्टर्नर के मन में महसूस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इस विश्वास को जगाने के लिए मोदी जी ने तय किया, हर केंद्रीय मंत्री को उन्होंने निर्देश जारी किया, आप लोगों को दिल्ली नहीं बैठना है, आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए। हर 15 दिन के अंदर हर केंद्रीय मंत्री को नॉर्थ ईस्ट का दौरा करना पड़ना होगा और आपको अपनी विभाग की जो भी कार्यक्रम सही समय पे अगर लागू नहीं हुआ, उनको सही समय पे लागू करना होगा और नॉर्थ ईस्ट की जनताओं को आपको समय देना होगा, बातचीत करना होगा और आप सिर्फ टूरिस्ट के हिसाब से सुबह फ्लाइट से आके शाम का फ्लाइट में वापस नहीं जा सकते। आपको 2 रात यहां गुजारनी होंगी और अलग अलग प्रदेश की जनताओं के साथ बातचीत करना होगा, सरकार के बारे में उन लोगों का मन में क्या ख्याल है। मोदी जी ने ये व्यवस्था लागू किया। ये पहली बार के लिए स्वतंत्रता के पिछले 75 साल के अंदर पहली बार के लिए दिल्ली को नॉर्थ ईस्ट लाया मोदी जी ने।
और हमारे आंगन में हर केंद्रीय मंत्री को दायित्व दिया कि नॉर्थ ईस्ट जाइए, नॉर्थ ईस्टर्न के साथ बातचीत कीजिए और उनकी समस्याओं को हल निकालने के लिए आप सही कदम उठाइए। तो आपने देखा है, इसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट देश के अंदर एक पिछली इलाका नहीं रहा। वी आर ऑल्सो मार्चिंग टुवर्ड्स बिकमिंग द मोस्ट पावरफुल रीजन ऑफ द कंट्री। In the last 8 years, whatever opportunity, whatever facility, whatever financial support we have received out of the good governance of Honorable Prime Minister, now Northeast is shining. You look at the Northeast. Earlier, what was the perception of the people living other parts of the country? They have always considered Northeast to be the area of troubles, extremists, bomb blasts, kidnapping, all unrest and deteriorated law and order situation. That was the picture of Northeast. That was the identity of Northeast. But Honorable Prime Minister's sincere and devoted effort, peace has come back to Northeast. Peace is restored in Northeast. Tranquility has come in our lifestyle. And also, all the youth, energetic youth, are aiming to become great in his or her life. This is the transformation we have seen in the entire Northeast out of Modi's good governance. सुशासन के वजह से ये संभव हुआ है। आप सहमत है ना? आप सहमत नहीं है क्या? देखिए, मैं जो बोल रहा हूं, मैं नॉर्थ ईस्टर्नर हूं। I feel proud to be an Indian. I feel proud to be a North Easterner. और मैं नॉर्थ ईस्ट का हूं, इसलिए मैं नॉर्थ ईस्ट की भाषा, नॉर्थ ईस्ट की दर्द मैं पहचानता हूं, समझता हूं। और मैंने खुद जो परिवर्तन देखी है, हमें बताना ही होगा हकीकत। You must glorify. It is not order. It is our responsibility. If someone is doing good for our growth, if someone is doing good for our security, if someone is doing something good for our overall development, he must be glorified. He must be appreciated. So this is what I am doing. Anyway, I have taken more than 30 minutes now. मुझे 30 मिनट दिया गया था, मैंने देखा है सुशी को। तो अब हमारी जो जिम्मेदारी है, सिटीजन रेस्पॉन्सिबिलिटी। मोदी जी ने पहले जो मंत्र उन्होंने तय की थी, देश को जोड़ने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि हमारे देश, हम एक है और हम सर्वश्रेष्ठ है। अरुणाचल हो या गुजरात, केरल हो या मिजोरम, असम हो या कश्मीर, हम सब साथ साथ है, साथ साथ रहेंगे। आप अनुमान कीजिए, 130 करोड़ जनता अगर साथ जुड़ जाए, मुट्ठी जैसे, इसको कितने देखने में कितना ताकत लगता है। इसका सिंबलाइज क्या है? सिंबल है यूनिटी, पावर इन यूनिटी। अगर हम एक साथ जुड़ जाए, हमारा शक्ति दुगुना हो जाएगा। अगर एक शक्ति दुगुना हो गया, तो हम हर क्षेत्र में अपने शक्ति को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शक्ति के हिसाब से अपना पहचान बनाने में सही योगदान दे सकते हैं। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत को विश्व गुरु बनानी है। आज तो विश्व गुरु बन ही गया है। आप लोगों को एक बात सुन के बहुत खुशी होंगे। WHO, World Health Organization, the most strongest health wing of UN, आपको सबको जानते हैं। तो आज
दो दवाई, दो पद्धति, दो तरफ की आस सिस्टम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ काम कर रहे हैं। दो पद्धति, एक ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न, एलोपैथी एंड आयुष। आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोहारिकपा, योगा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी. In Ayush, there are 7 numbers. So these are the two, traditional and modern, working together for the preservation of human health, prevention of disease. तो आप सबको मालूम है सदियों से दुनिया की 170 देश, 170 numbers of countries in the world, they are practicing traditional medicine. But out of 170 countries, WHO ने एक ही देश को सबसे बड़े मान्यता दी, वो देश का नाम है हिंदुस्तान, भारत। यानी कि आप देखिए देश के अंदर 5 लाख से अधिक गांव हैं, 5 लाख से अधिक। आप भी गांव के हैं, मैं भी गांव का हूं। शहर तो बाद में बनी है, सब गांव का ही है। तो 5 लाख गांव के अंदर हमारे अलग अलग जो भी शरीर का कोई कठिनाई होता है, संकट होता है, बीमार होता है, तो हम क्या करते हैं गांव में? कई वैद्य का पास, कोई जोशी का पास, कोई बेस, हम असम में बेस बोलता है, किसी को कोई हिलार बोलता है, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उनके पास चला जाते हैं। We go to this local practitioner of traditional medicine and approach him and explaining my problem in the stomach, head, whatever. Then that gentleman come with all this. They have some script in their own, like on a manuscript form. They have certain script of traditional knowledge, and out of this they recommend some solution, and that solution may be in the form of making a medicine out of applying some leaves of some trees, some creepers, some fruits, a bark of the tree or root of the tree. This is the traditional way of treating the patient in the villages that has been continuing for centuries together, thousands of years. Now, those practitioners who have never got the recognition, कोई तो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम को कोई लोग अलग अलग से पुकारते हैं, कोई बोलता है जादू मंत्र है, सुमंत्र है, ये है, सुपरस्टिशन है, अलग अलग मतलब लोगों का परसेप्शन है। लोग इनको विज्ञान नहीं मानते, मानते थे पहले, और हमारे देश में भी इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन मोदी जी ने जब से दायित्वभार संभाला 2014 तक आयुष विभाग एक मामूली सा विभाग थे, कहीं मंत्रालय में पड़े हुए थे, कोई देखता नहीं था। लेकिन मोदी जी ने सही पहचाना, भगवान ने जो प्रकृति रचना की है, जो पृथ्वी रचना की है, इस पृथ्वी में क्या नहीं है? पहाड़ है, घाटी है, जंगल है, जानवर है, कीड़ा मकोड़ा है, सागर है, महासागर है, नदी है, झील है, झरनी है, आकाश है, अंतरिक्ष है, सब प्राणी है, छोटे छोटे प्राणी है, बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजी है, एनवायरमेंट है। प्रकृति ने अपने हाथों से सजाया है, और इस प्रकृति में सब प्रकार की शक्ति मौजूद है। मनुष्य को खोजना होगा, अनुसंधान करना होगा, यानी कि रिसर्च एंड स्टडी people will have to conduct with the most modern method of technology. Then you will discover the truth. कौन सा ये जो पेड़ है, इस पेड़ में, इस पत्ते में क्या क्या गुण है? अगर लेबोरेटरी में ले जाएंगे, आप बायोकेमिस्ट्री के हैं ना, आपको मालूम होगा, तो आप जब लेबोरेटरी में स्लाइड में जब डालेंगे तब देखेंगे इसका पास क्या क्या इंग्रेडिएंट है मेडिसिनल वैल्यू का. That will be the findings, and ultimately that findings will be the best scientific evidence
That findings will create the evidence of science. And out of that evidence, you are going to prepare the medicine, food supplement for the preservation of human health and prevention of disease. So, Honorable Prime Minister has deeply realized the necessity of this treatment, because this has been practiced thousands of years of back, and this has been inherited from our forefathers by the present generation. Now that need to be recognized. That skill need to be recognized. That science need to be recognized. So that is why, after becoming the Prime Minister, Modi has rightly started the innings to empower traditional practice of medicine by constituting an independent ministry. And from independent ministry 2014 to this extent cabinet rank, with 6 times more budgetary provision. And now, because of his serious effort, devoted effort, now Ayush of India is shining in the globe. In the global market, do you know what is the strength? What is the market created by Ayush industry of India? $18.2 billion. Before 2014, it was only $3 billion. From 3, just 8 years, because of the Honorable Prime Minister vision and honesty and commitment and good governance and right policy and program, from 3 to jump to 18, only in 8 years. So now, WHO has rightly decided to give the leadership to India. And that is why WHO's Director General Dr. Tedros, he physically visited India along with our Honorable Prime Minister, and in presence of the Prime Minister of Mauritius, Gujarat, Jamnagar, the WHO has set up their first ever extension office in India. So this is the tallest achievement in the traditional system of medicine by Indian practitioners. I must salute all the gurus, all the practitioners across the country. Now, Honorable Prime Minister has directed both the Ministry of Health and Family Welfare, modern, Ministry of Ayush, to work together with integrated effort. और अब देश की जनता की स्वास्थ्य सही, सुरक्षित, निरोगी रहे, इसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें निर्देश जारी किया है कि हेल्थ मिनिस्टर और आयुष मंत्री एक साथ मिलकर अपने अधिकारियों के साथ हर महीना आप लोगों को बातचीत करना होगा, और एम्स से लेकर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, अप टू द सब सेंटर लेवल तक दोनों पद्धति की चिकित्सा जनता की हितों के लिए उपलब्ध करना होगा. Now in India, we are going to get 2 systems of treatment in the same center. In the same center of community health center, supposing there will be Ayush doctor and also the doctor of allopathy. Okay, MBBS doctor. And there will be nurses of our system and also nurses of modern system. Laboratory technician and medicine, all kind of items will be made available for the choices of the countrymen. बहुत बोल दिया ना, सिल्ला सिल्ला के बोला. तो ऐसा है कि इसलिए मुझे बोलना पड़ा. इन चीजों को आप लोगों को भी चर्चा करना चाहिए. ये सर्बानंद सोनोवाल मंत्री होने के नाते मैं बोल रहा हूं, ऐसा बात नहीं है. हर नागरिक को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें दायित्व दी, ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना शुक्ला जी, हर नागरिक का जो ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी निभाना चाहिए. इसलिए मोदी जी ने आखिरी में क्या लगाया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. ठीक है. तो आज 1 साल पहले क्या लगाया उन्होंने? कहा सबका प्रयास. यानी कि आपको हमको मेहनत करना होगा. मेहनत के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में मंजिल हासिल नहीं कर सकते. मेहनत के बिना आप मंजिल नहीं देख सकते. आपका जीवन का क्या लक्ष्य है आपको पता ही नहीं चलेगा मेहनत नहीं करोगे तो. इसलिए मोदी जी का कहना है, अगर परिवर्तन चाहते हो अपने जीवन में
अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने प्रदेश में, अपने देश में, तो आपको कठोर परिश्रम करना होगा। कठोर परिश्रम के बिना परिवर्तन संभव नहीं है। ये स्लोगन नहीं हो सकते, ये जीवन का हकीकत है। जमीनी हकीकत से अपने आप को जोड़ने के लिए यही सही रास्ता है। So with these few words, few तो नहीं बोलोगे, बहुत बोल दिया. With this prolonged speeches, I believe all tiring, ना? Are you feeling tired? बुरा मत बनिएगा, माफ कीजिएगा. This is my first visit, and whatever I have met my statement, I am making it with full of my conviction. And I have seen the leader, Narendra Modi ji. He has got divine quality. मनुष्य को भक्ति भावनाओं से जो नेता, जो व्यक्ति सेवा करते हैं, वही भगवान का ही बड़ी वरदान होती है. मुझे लगता है कि हम सबको गर्व महसूस करना चाहिए, देशवासियों को. हमें ऐसा एक महान नेता के नेतृत्व में देश सेवा करने के लिए मौका मिला है. So with these few words, I am really thankful to the Vice Chancellor and all the respected teachers and also the respected register. Register का नाम मैंने बोलना भूल गया, sorry. Register साहब यहाँ है ना, हमारे सौरभ दीक्षित जी है ना? Register जी कहाँ है? माफ कीजिएगा, शुरुआत में मैंने कहीं हो गया ये. Anyway, I am really thankful to all of you, and I am making a special request, particularly the IIM की जो भी हमारे गोयल साहब है. मैनेजमेंट ये प्रमुख विषय है. जीवन में अपने आप को भी मैनेज करना पड़ता है. टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, कैरेक्टर मैनेजमेंट, एंड बिहेवियर मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ इनकम. लाइक मैनेजमेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ सिस्टम. तो इसलिए सही ये जो IIM जो हमारे लिए बड़ी एक संस्था है, तो इसमें जो भी मैनेजमेंट सिखाया जाता है, मुझे लगता है कि हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थियों को इससे जोड़ना चाहिए. ऐसा बात नहीं है कि मैं मैनेजमेंट के स्टूडेंट, मैं आर्ट्स का हूं, मैं कहीं साइंस का हूं, मैं कॉमर्स का हूं, मेरा मैनेजमेंट से कोई रिश्ता नहीं. मैनेजमेंट सबको चाहिए, सबको चाहिए. मेरे लिए सही, सर्वानंद सोनोवाल को भी मैनेजमेंट चाहिए. अगर मैनेजमेंट का सही शिक्षा नहीं होगा तो मैंने अपने कपड़ा को कैसे पहनूं? आपके ड्रेस सेंस को भी मैनेज करना पड़ता है ना? बोलने के लिए भी सारे सम्मानित व्यक्ति उपस्थित है, सबका सामने मैं कैसे सिर झुका के सबसे आशीर्वाद लूं. हमारी जो परंपराओं के मुताबिक ये भी तो मैनेजमेंट है. यानी कि एक समाज को ईमानदारी से मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए हमें ज्ञान चाहिए. ज्ञान, भक्ति, वैरागी ये जीवन का अमूल्य अंग होते हैं. ये अनुभूति अगर हर व्यक्ति का मन में सही रहेगा, वो व्यक्ति कभी भी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हो सकता. समाज को हमेशा भगवान मान के ही सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे. तो इसलिए मैनेजमेंट मैं यही चाहता हूं कि हमारे गोयल साहब ऐसे ही सारे नॉर्थ ईस्ट को कैसे हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाए, इसके लिए हमें टाइम कैसे मैनेजमेंट करे, कैसे हम एफोर्ट दे, और हमारी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, भगवान ने हमें जो बायोडाइवर्सिटी का शक्ति देकर रखा है, इस बायोडाइवर्सिटी को सही संरक्षण करना ही होगा. यही हमारी असली पहचान है. थैंक यू. जय हिंद.